Now we are going to start with the problem set 5. Question number 1 is a multiple choice question that you can easily handle it. I'll start with question number 2. They are given us these 3 questions here, sub-questions. In every sub-question there are 3 points. We have to show that they are collinear. In short, we have to find slope of AB and slope of BC. If the value of both the slopes are same, equal, and point B is the common point between them, therefore they will be collinear. If the slopes are not equal, then they are directly not collinear. Start. Suppose coordinates of point A be x1, y1, BB, x2, y2, and CB, x3, y3. Now simply, we will write x1, y1, x2, y2, x3, y3 values and start. Slope of line, first take A and B. This will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. कितना आता है? y2 is minus 0.5 minus 2 whole upon x2 is 1 minus 0. This will be minus 2.5 upon 1. So, slope of line AB is equal to minus 2.5. Now go for slope of BC. Slope of line BC. y3 minus y2, x3 minus x2. क्या आएगा? y3 is minus 3 minus minus plus 0.5 upon 2 minus 1. This is minus 2.5 upon 1. Therefore, slope of line BC is minus 2.5. देखो, from 1 and 2, from 1 and 2, slope of line AB equal to slope of line BC. Also, point B is common to both lines. Therefore, points A, B and C are collinear. हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा. ये A और B के बदले P, Q, R. ये पॉइंट सब बदल जाएंगे. नेचुरली इसकी वैल्यूज बदलेंगी. ये नाम लाइन ए बी नहीं रहेगा. ये जो नहीं हो सकता वो निकाल दो. मतलब you can do it in your textbook or notebook भी ध्यान रखो. Now points P, Q and R. The question number sub question 2. x1 y1 ये हो गया. x1 y1 is 1 2. x2 y2 is 2 8 upon 5. x3 is 3 and y3 is 6 upon. So we are in line. We are interested in finding slope of line PQ. It will be y2 minus y1. So 8 upon 5 minus 2 the whole upon 2
2 minus 1, x2 minus x1. तो इसका एलसीएम ले लो, ये 2 upon 1 रहेगा, तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 minus 10 upon 1. So this will be 2 upon minus 2 upon 5. So line PQ, slope of line PQ is minus 2 upon 5. No, slope of line QR. Y3 minus Y2. So it is 6 upon 5 minus 8 upon 5 divided by 3 minus 2. LCM low, denominator is 5. So it will be 6 minus 8 as it is upon 1. So ये minus 2 upon 5. तो ये क्या होगा line QR? Minus 2 upon 5. So ये AB चला जाएगा, ध्यान से देखो, slope of line PQ equal to slope of line QR. Point Q is a common point on both lines. Therefore, P, Q, R are coordinate. ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन. अभी थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकेंड इज कंप्लीट. थर्ड पे हमें इसे करना भी LMN है, तो ये P निकाल लो. क्वेश्चन 3 है तो ये वैल्यूज निकल जाएंगी. Okay. So question 3. x1, ये L है अपना पॉइंट्स. L is x1 y1, M is x2 y2 and N is x3 y3. So x1 y1 क्या है? 1 and 2. ये 5 and 3, 8 and 6. So ये लाइन PQ नहीं होगा, लाइन L, पहला 2 अल्फाबेट्स LM. So इसका क्या होगा? y2 minus y1, 3 minus 2 upon 5 minus 1. So there is nothing but 1 upon 4. 1 upon 4. So line LM is 1 upon 4. Slope of line LM is 1 upon 4. Slope of line MN now. क्या होगा? y3 minus y2, 6 minus 3 upon 8 minus 5. So it will be 3 upon 3. That is 1. So Mn is, slope of Mn is 1. From 1 and 2, slope of Lm not equal to slope of Mn. Therefore, points L, M and N are not collinear. Okay. So question number 2 we have completed. Now we go to question number 3. Question number 3 क्या है? Find the coordinates of the midpoint of a line segment joining P and Q. P is 0, 6. Question number 3.
find coordinates of midpoint of seg PQ. P कितना दिया हुआ है 0,6 Q is 12,20. Solution. देखो find the coordinates of midpoint of PQ. तो ये midpoint formula से होने वाला है. Let m x, y be the midpoint of line segment PQ. Therefore, suppose the coordinates of P and Q are x1, y1 and x2, y2. ये मैं सपोज कर लिया. अभी हमें we'll use midpoint formula and get the answer. Start. Therefore, using अच्छा पहले हम लोग वो x1 y1 लिख लेते हैं हमेशा की तरह. x1 is equal to y1 equal to x2 equal to and y2 equal to. So x1 कितना है भाई अपना 0, y1 6, x2 is 12, y2 is 20. Therefore, using midpoint formula, x will be x2 plus x1 upon 2 and y2 plus y1 upon 2. Therefore, x2 क्या होगा 12 plus 0 upon 2. Therefore, y is 20 plus 6 upon 2. Therefore, x is equal to 12 upon 2. Therefore, x is equal to 6. Therefore, y equal to 26 upon 2. Therefore, y equal to 13. Therefore, coordinates of midpoint of line segment PQ is or are 6, 13. अभी आते हैं फोर्थ क्वेश्चन. Find the ratio in which a line segment joining A and B is divided on y-axis. सेक्शन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. सेक्शन फॉर्मूला here because ratio फाइंड करना m is to n. तो क्वेश्चन बफोर में दे दिया है. Suppose this line segment. Solution for ये A है. Coordinate of A is 3,8. इसको x1, y1 ले लेते हैं. B का देखते हैं. B is -9,3.
इसको हम लोग x2, y2 लेते हैं, इसको m लेते हैं, नहीं m न मत लो, इसको p लो, x, बिकॉज mn हमें डिवाइड करना है, यू हैव टू फाइंड m and n, रेशियो फाइंड करना है. सो स्टार्ट. Suppose let point M x, y divides segment AB in ratio M is to N. Suppose co-ordinates of A and B x1, y1 and x2, y2. ये हमारा रोज का स्टेटमेंट. Therefore, x1 क्या है, फाइंड करना है, लिखो x1, y1, x2 क्या है, लिखो y2, उसके चलेगा 3, 8 and -9. एक पॉइंट उन्होंने दिया है. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी हो दिया है. इट इज डिवाइडेड बाय, find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by, अच्छा ये y axis है. Please understand, since point M lies on y axis, its x coordinate is 0. That is, x is equal to 0. याद रखो यहाँ, sorry, P. Point P lies on y-axis. Its x coordinate will be 0. तो हमें y coordinate लेना है. x कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं. चलो x कोऑर्डिनेट से करते हैं. सो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. देयरफॉर x इज 0. m हमें फाइंड करना है. x2 इज -9 प्लस n हमें फाइंड करना है. x1 is 3. और ये m plus n. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 0. Anything multiplied by 0 is 0. This will be -9m plus 3n. 9m को इस तरह लेके जाओ, we get 9m equal to 3n. Therefore, m upon n equal to 3 upon 9. Therefore, m upon n equal to 1 upon 3. Therefore, point P, which lies on therefore, क्या मुझे पूछा है? Find the ratio in which segment divided by therefore y-axis divides seg AB
in ratio 1:3. P lies on y-axis, its x-coordinate will be 0. क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. Find the point on x-axis which is equidistant from both P and Q. P is 2, -5. इसको x1, y1 लेंगे. And अपना Q is -2, 9. इसको x2, y2. क्या पूछा है? Find the point on x-axis which is equidistant from this. Question number, solution 5. Let point M x, y be on x-axis and equidistant from point P and Q both. Find point on x-axis which is equidistant from and yaw. We can use distance formula. अच्छा पढ़े लिखो. Since point M lies on x-axis, its y coordinate is 0. That is y equal to 0. Therefore, M is x, 0 ऐसा है. From given PM, distance PM equal to distance QM, square root of. एक पॉइंट और लेंगे, लाइन हम हमेशा भूल जाते हैं. वो x1, y1 लेने को रोज का है, वो इजी पड़ता है. वंस वी पुट अंडरस्टैंड द वैल्यूज ना, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना अपने को. सो राइट डाउन फर्स्ट देयरफॉर व्हाट इज x1 एंड y1 लिखो, x2 एंड y2 लिखो. x1 is 2, y1 is -5, ये -2 and 9. Therefore, using
distance formula and from given PM, distance PM equal to distance Qn. Therefore, square root of PM का मतलब ये x और y, ये P है, ये Q है, तो PM लेते हैं x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equal to here x minus x2 the whole square plus y minus y2 the whole square. Squaring both sides. पहले ही हम ये square root निकाल देते हैं. So we get x as it is, minus x1 is 2 the whole square, plus y is 0, minus y1, minus minus plus हो जाएगा, 5 square. ये निकल गया root sign. So x minus x2 is minus, so minus minus plus 2 square, plus y is 0, minus y2 कितना है 9. यह आएगा x square minus 4x plus 4 plus 25 equal to, expand किया मैंने a plus b the whole square, that is a square plus 2ab, so 4x plus 4 plus 9 square 81. So ये एक स्टेप और लेते हैं, x square minus 4x plus 29, x square plus 4x plus 85. Now I bring all x on left hand side and constant on right hand side. So ये होगा therefore x square minus x square minus 4x minus 4x, side changes, sign changes. ये आएगा 85 minus 29, ये कैंसिल हो गया. You get minus 8x equal to 85 minus 29. 15 minus 9 is 6. 7 minus 2 is 5. ये आता है 56 positive. Therefore, it's 8 5 are 40, 8 7 is 56. So x is equal to minus 7. Y is 0 we know. हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट. Therefore, coordinates of point M on x axis is an equidistance, distant from P and Q are minus 7, 0. ये आंसर अपना. अरे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलो इरेज करते हैं, अभी 6 पे जाते हैं. Question number 6. Find the distances between following points. तो सब पॉइंट्स लिख लेते हैं.
306 का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट. A, capital A, it is small a comma 0 and B is 0 comma A. 6 and minus 3, minus 1, 9. Sorry. Minus 6, minus 3. P is minus 6, minus 3 and Q is minus 1, comma 9. R is minus 3A and A, or S is A and minus 2A. You have to find the distances between them. You have to find distances between the following points. Solution 6 का first solution. Suppose co-ordinate of A and coordinates of A and B are x1 comma y1 and x2 comma y2. Therefore x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, लिख लो. x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, लिख लो. x1 is a, y1 is 0, x2 is 0, x2 is 0, y2 is a. Now, using distance formula, ink. Using distance formula, chalo. Therefore, what is distance A comma B? Square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. x2 कितना है? 0 minus a the whole square plus a minus 0 the whole square. This is minus a the whole square plus a the whole square. Minus a square कितना होता है? Positive square होंगे और ये भी is positive. So we get 2 square root of 2a square. So it is a root 2. Distance a comma b is a root 2. पहला पॉइंट हो गया. Now we go to next question. इसका सॉल्यूशन a and b निकाल दो. ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है. Okay. Now we are in P and Q. X is minus 6, minus 3, Q is minus 1, Q में x1 और ये y2 is x1 y1, x2 y2 मिल गया. Now we want distance P comma Q. x2 minus x1. So it is minus 1, ये minus minus plus 6x square. 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 स्क्वायर. तो ये आएगा आपका 5 स्क्वायर. 6 minus 1 is 5 और ये आएगा 12 स्क्वायर. 5 square is 25 plus 144. This is square root of 169. So distance PQ will be 13 units. Question 2. Got the answer.
Now we go to question number 3. Third sub question. RNS x1 y1, so it is minus 3a and a, x2 y2, so a and minus 2a. Using distance formula pq nahi, it is now r comma s. Substitute karo x2 minus x1, so it is a, this minus into minus plus 3a the whole square minus 2a minus a the whole square. तो ये आएगा आपका 4a the whole square plus minus 3a the whole square. 4 4s are 16a square plus 9a square. याद रखो minus 3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. minus 3 into minus 3 is 9. तो आएगा ये 25a square. So distance r comma s is 5a units. So with this our third question gets completed. अभी जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है. क्वेश्चन 7 क्या है देखो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर का मतलब समझते हो, एक ट्राइंगल दिया है एंड अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो सर्कमसेंटर होता है. ओके. और इन सेंटर क्या होता है? इफ द साइड्स ऑफ अ सर्कल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल touches the circle from outside. In center. Circumcircle, ये circumcircle, ये in circle. Circumcircle, in circle. इसको याद रखो. अभी हमें फिगर ड्रॉ करनी है टू अंडरस्टैंड. फाइंड द कॉर्नर ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर. तो पहला एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. And this is the triangle. तो ये अपना सर्कम सर्कल हो गया. Vertices of triangle are, suppose we consider PQR. PQR. Find the corner of circumcenter. हमें O की वैल्यू निकालनी है. ओके. सो वर्टाइसेस लिख देते हैं हम लोग. P is minus 3,1. ये क्या है? Q 0, minus 2. And 1,3. अब ध्यान से देखो इन सब क्वेश्चंस को. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली.
ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x, y। ये होगा, आप जानते हो, x1, y1, ये होगा x2, y2, ये होगा x3, y2। हमें x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ ज्वाइन कर दो। आप जानते हो ये क्या हो गया, रेडियाई, तो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल PO, तो दो कोई भी एक साथ ले लो, चलो करो। सॉल्यूशन 6 या 7 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है। सो सॉल्यूशन 7, लेट O x, y be the circumcenter of the circle passing through ink। बाद में डाल दूंगा इसके बाद, आफ्टर दिस क्वेश्चन पेन में इंक डाल दूंगा। Be the circumcenter of a circle passing through vertices A, x1, vertices A क्या है, नहीं vertices A नहीं है, P है। P क्या है, -3, 1, Q 0, -2 and R 1, 3 of triangle PQR. Suppose the co-ordinates of point P is x1, y1, of point Q is x2, y2, and point R is x3, y3। तो लिख लो, therefore x1 क्या है, y1 क्या है, ये है for P, for Q, for R। x2 क्या है, y2 क्या है, x3 and y3। चलो, ये x1, y1 है, so -3, 1, x2 is 0, -2, ये है 1 and ये है 3। We know OP equal to OQ equal to OR, radii of same circle. Therefore, using distance formula, OP इक्वल टू OQ पहले निकालते हैं। डिस्टेंस OP इक्वल टू डिस्टेंस OQ, P के साथ O इज दिस, सो स्क्वायर रूट ऑफ x minus x1 square plus y minus y1 square equal to OQ, x minus x2 square plus y minus y2। ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, squaring both
sides. Squaring both sides. तो क्या होगा आपका स्क्वायर का? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा देखो. ये स्क्वायर रूट निकल गया. So I get x माइनस x1 की वैल्यू है 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. y as it is. y1 minus 1. x minus x2. y minus y2. So y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. इसको एक्सपैंड करो. y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. यह आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y. ये 2 है ना, प्लस 4. हमें अरेंज करना है. एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, एक्स स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर कम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स स्क्वायर. बाद में प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये वाई स्क्वायर इस साइड आएगा. साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. अभी 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 4y प्लस 4. ये सब चला गया. बचेगा क्या? 6x माइनस 2y प्लस 1, 4y प्लस 4. Therefore 6x minus 6y equal to 3. Dividing both sides by 3. So 2x minus 2y equal to 1. यह आपका इक्वेशन आएगा 1. Both sides by 3. Now go to next radius. ये बहुत बड़ा हो जाएगा. Hope we will able to do it. मुझे रीशूट करना पड़ेगा इसको. अभी OP OR हो गया. अभी OQ OR लेते हैं. Also O distance OQ equal to distance OR. OQ x minus x2. So राइट हैंड साइड सेम आएगा. देखते हैं. y minus y2 equal to square root of x minus x3 the whole square plus y minus y3 the whole square. Squaring both sides. Square root sign चला गया. So what you get? x x2 is 0. So x minus 0 whole square. In fact ये आएगा तुम्हारा y plus 2. Because this is OQ. देखो distance OQ ये सेम है. ये अलग आएगा. x minus x3. x is ये minus 1 आएगा. और y minus
y3 is 3. इसको एक्सपेंड करो तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. इसको एक्सपेंड करो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस इसको एक्सपेंड करो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. अभी सब स्क्वायर टर्म इस साइड लेके आओ. Therefore x square minus x square plus y square minus y square plus 4y plus 4 equal to ये आएगा minus 2x minus 6y plus 10 because 1 plus 9 is 10. ये चला गया. So we get 4y plus 4 equal to minus 2x minus 6y minus 6y plus 10. इस साइड लेके आओ. सो वी गेट 2x प्लस 10y इक्वल टू 6. बराबर है. माइनस 2x कम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव. 2x 6y कम्स ऑन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव. सो 4 प्लस 6 इज 10y. 4 उस साइड गया तो माइनस. इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं 2 से. I keep this as equation number 2 because यहाँ मुझे 2x है. Now subtracting equation 2 from 1. मैं डायरेक्ट करूं 2x माइनस 2x चला गया. माइनस 2y ये प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस है तो माइनस 12y और ये 1 माइनस 6 इज माइनस 5. सो y का कोऑर्डिनेट होगा 5/12. पुट इन इक्वेशन. पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1. सो जगह नहीं है तो मैं कमेंट कर रहा हूं. So 2x minus 2 into 5/12 equal to 1. So ये 2 1 2 6 है. So 2x minus 5/6 equal to 1. उस साइड जाएगा तो 2x is equal to 1 plus 5/6. So 2x will be 11/6. So x will be 11/12. So we got this coordinate. Final answer. Co-ordinates of circumcenter is 11/12 and 5/12. ये आंसर है आपका. ये पूरा रॉन्ग है. क्या हुआ देखेंगे. Now BC. See, therefore BC equal to square root of x3 minus x2. So it is minus root 6. This minus into this minus plus root 2 square plus y3 is root 6 minus into this minus plus root 2 square. In short, इसको expand करो, you get 6 minus 2 root 12 plus 2 plus 6 plus 2 root 12 plus 2. ये कैंसिल हो जाएगा.
2 root 12 minus 2 root 12 plus 2 root 12 get cancel out. So what will be left is BC equal to square root of 6 plus 6, 12, 12 plus 4, 16. So BC equal to 4 units. अभी थर्ड लेते हैं. AB हो गया, BC हो गया, AB हो गया, BC हो गया, भी AC. AC equal to distance A comma square root of A and C. So x3 minus x1. x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. यह आएगा y, अच्छा यह आएगा -6 minus root 6 minus root 2 plus y2 is root 6 minus root 2. तो ये माइनस बाहर निकालो, सो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये माइनस ए माइनस बी तो होल स्क्वायर होगा ना, तो -1 बाहर निकालो स्क्वायर, ये a प्लस बी हो जाएगा. सो दिस विल नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर. माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो ये आएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर. तो 6 माइनस 2 रूट, सॉरी ये प्लस है, 12 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 रूट 12 प्लस 2. तो ये भी आएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 16 4 यूनिट्स AC. Here AB plus BC greater than AC. Therefore, we can, since sum of any two sides is greater than third side, we can draw a triangle. Therefore, also, since AB equal to BC equal to AC, therefore triangle ABC is equilateral. Question number 8, all the 3 sub questions completed. Now we are going to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. See, we'll read the question number 9. Find the value of k if the line passing through points P 12, minus 3 and Q 4, k has a slope 1/2. तो पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन 9 है, फाइंड k if the line passes
this line passes through P, minus 12 minus 3 and Q, 4 comma minus 50, 4 comma K, slope of line is 1 upon 2. Solution हमेशा की तरह इसको x1 y1 और x2 y2 लेना है p और q को, तो हमें क्या करना है, you know, suppose coordinates of p and q are x1 comma y1 and x2 comma y2. Slope of line PQ is equal to m. You can see the slope of line PQ is 1 upon 2 given. But now you take here x1 equal to, x1 is for P, coordinates of P, minus 12 and y1 equal to minus 3. x2 is equal to 4, y2 equal to k. Therefore, slope of line PQ, formula आप जानते हो, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Therefore, but what is slope of line PQ? Half. So 1 upon 2 equal to y2 is k, this minus and minus plus minus minus plus 3. x2 is 4, this minus and this minus 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 plus 12. So 1 upon 2 equal to, नहीं तो सीधा ऐड करो, ये 16 इस तरह रहेगा, 16 equal to k plus 3. Open the bracket, नहीं तो डिवाइड करो, 8 equal to k plus 3. Dividing both sides by 2. So k equal to, answer, value of k is 5. Now we go to question number 10. अभी क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ लो. It's very simple. ये क्वेश्चंस हमने किए हैं पहले स्टेप के. We have done in the practice sets. Show that line passing through points P, 4 and 4,8 are the coordinates of A. Coordinates of B is 5,5. Is parallel to line joining points. मतलब you have to show AB parallel to CD. AB के coordinates दिए हैं और CD के coordinates दिए हैं. So write down the A और B के कोऑर्डिनेट लिख दो, C और D के कोऑर्डिनेट लिख दो. A के कोऑर्डिनेट है 4,8, B is 5,5, C is 2,4, 1,7. ये आपको दिए हुए हैं. And they show that lines are parallel. Question number 10 है ना.
Yes. Question 10. Show AB parallel CD. Refer text given. देखो ये दी हुई है एंड वी हैव टू शो दिस ए बी पैरेलल टू सी डी. चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. सपोज हमेशा की तरह सपोज coordinates of A, B, C and D be x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, therefore what is x1, y1, what is x2, y2. मेरे लिख लो. ये है अपना x1, y1, ये है x2, y2, ये है x3, y3, x4, y4. x3, y3 with C and D will take later on. पहले हम लोग A और B का सोल्यूशन निकालते हैं. इसमें क्या स्लोप आता है. So this is 4 and this is 8. This is 5 and this is 5. Therefore slope of line AB equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये फॉर्मूला है. So y2 क्या है? 5 minus 8, 5 minus 4. This is minus 3 upon 1. Therefore slope of line AB is minus 3. Now x3, y3, x4, y4 फाइंड करो. x3, y3 is 2, 4. This is D and 7. x4, y4. Therefore slope of line CD y4 minus y3 upon x4 minus x3. y4 कितना है? 7 minus 4 or is 1 minus 2. So this will be 3 upon minus 1, that is minus 3. Therefore slope of line CD is minus 3. From 1 and 2, देखो from 1 and this 2, we conclude the slope of line AB equal to slope of line CD. Slope of line AB equal to slope of line CD. Therefore, क्या पूछा उन्होंने? Show that line joining. Therefore, line AB parallel line C. अब जाते हैं next question, that is 11th. Slope equal हो जाएगा. When slopes are equal, lines are parallel. We have studied that. If m1 equal to m2, lines are parallel. m1 multiplied by m2 equal to minus 1, the lines are perpendicular. मैं नोट दिया था. Now we go to question number 11.
शो दैट पॉइंट्स, देखो उन्होंने दिए पॉइंट्स P 1, -2, Q 5, 2, R 3, -1, S 1, -5, नो -1, -5 पॉइंट्स तो बराबर दिया मैंने 1, -2, 5, 2, 3, ओके are the vertices of parallelogram are the vertices show they are the vertices of parallelogram. Solution. If this is a parallelogram, then PQ has to be parallel to SR. Same way, PS has to be parallel to QR. Opposite sides has to be parallel. So slope has to be equal. अगर slope equal है, opposite sides parallel है तो क्या होगा? Quadrilateral is a parallelogram. तो हमें सिर्फ इसका और इसका slope same दिखाना है और इसका और इसका slope भी सेम दिखाना, अपोजिट साइड्स के स्लोप सेम दिखाना, इक्वल दिखाना, मतलब दे आर इक्वल. चलो स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 1, -2 इसका कोऑर्डिनेट है, 5, 2 इसका कोऑर्डिनेट है, 3, 1 इसका कोऑर्डिनेट है, -1, इसको x1, y1 ले लेंगे, इसको x2, y2 ले लेंगे, इसको x3, y3 एंड इसको x4, y4 एंड देन वी हैव टू शो द स्लोप्स इक्वल. चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज the coordinates of points P, Q, R and S be x1, y1, x2, y2, x3, y3 and पहला x आएगा, x4, y4 रिस्पेक्टिवली इज्जत से. चलो, therefore what will be x1, y1, x2, y2. अच्छा ये for P लिखे, for P, ये for Q, for PQ, R में S. ये x3, y3, x4, y4. लिखो x1, y1 क्या है? 1 और माइनस. x2, y2 क्या है? 5 एंड 2. x3, y3 क्या है? 3 एंड -1. s क्या है? x4, y4 -1 एंड माइनस. Now we start with the slope. Slope of line PQ. अपोजिट साइड बताना है ना, स्लोप ऑफ लाइन PQ. ये तो लेना x2 - x1 PQ. ये तो पहला आएगा y का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा. 5 - 1 4 upon 4. Therefore slope of line PQ is 1. अब SR लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन SR. SR मतलब ये y4
माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x। क्या होगा y4 क्या है माइनस y4 y3 क्या है माइनस माइनस प्लस 1 x4 माइनस 1 माइनस 3 तो आएगा आपका -4 -4। therefore slope of line SR also equal to 1. From 1 and 2, since slope of line PQ equal to slope of line SR, for line, therefore sec PQ parallel seg SR. ये थर्ड याद रखो। Now we go for PS and QR. No. Slope of line PS y4 और y1 है y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x। y4 कितना है -5 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ये है -1 जाएगा -3 अपॉन -2। therefore slope of line PS is 3 upon 2। यह आपका फोर्थ पॉइंट है। Now you go to slope of line QR. Slope of line Q y3 और y2 है ये, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x। y3 कितना है -1 y2 is 2 so y3 is -1 minus simply 2 x3 कितना है 3 माइनस 5 तो ये क्या होगा आपका -3 माइनस 2। स्लोप ऑफ लाइन QR is 3 upon 2। ध्यान से देखो स्लोप सेम है, फ्रॉम इक्वल स्लोप्स है 4 and 5। Since the slope of line PS equal to slope of line QR, therefore sec PS parallel seg QR। ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 4 हो गया, नहीं ये हो गया 3 4 5, ये है आपका 6। therefore from 3 and 6, since opposite sides of quadrilateral are parallel, therefore quadrilateral PQRS is a पैरेलेलोग्राम। पैरेलोग्राम है वो सिंपल है, हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, हमें सिर्फ प्रूव करना है स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ SR, जो हमने यहाँ किया इक्वल। सो इफ द स्लोप्स आर इक्वल PQ पैरेलल टू SR। सेम वे हमने स्लोप PS निकाला, स्लोप QR निकाला, दे आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर PS and QR are parallel।
Since opposite sides of a quadrilateral are parallel, quadrilateral is a parallelogram. 12th क्वेश्चन पे जाते हैं. Question number, we completed 11. Now we go to question number 12. Show that अभी ये रेक्टेंगल बताना है. P क्या है? 2, 1. Q is -1, 3. R is -5, -3. S is -2, -5. देखो बराबर है ना. 2, 1, -1, 3. 5, -3. -2, -3. Show that it's a rectangle. Show quadrilateral PQRS is a figure draw कर लेते हैं. Just for our reference. ये है P Q R. P का क्या है? 2, 1. Q is -1, 3. R is -5, -3. S is -2, -3. We have to show. पहला तो ये अपोजिट साइड्स आर स्लोप ऑफ अपोजिट साइड्स हम बताना है दे आर इक्वल. तो इससे क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सी हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11. उसमें हमने यही प्रूव किया था स्लोप्स आर इक्वल. इफ द स्लोप्स आर इक्वल देन इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ये पैरेललोग्राम हो गया. लेकिन इसका रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू शो टू मोर थिंग्स. यू हैव टू शो दैट दिस डिस्टेंस PR, ये तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट. ओके, और हमें PR कॉन्ग्रुएंट टू SQS मतलब डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट बताने. इफ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट and opposite sides also congruent. I repeat, if diagonals are congruent and opposite sides are congruent and parallel, so वो क्या हो गया? वो हो गया रेक्टेंगल. हमें एंगल 90 बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, और एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, आपके कॉन्सेप्ट पे टेक्स्ट बुक में नहीं है. देखो सिंपल, हमें स्लोप बताना है जो हमने पहले किए थे, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. और हमें बताना है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप प्रोडक्ट इज -1. इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. ये दूसरा मेथड है. वो शायद इजी है, लेकिन चलो जो मैंने अभी कहा हम लोग चालू करते हैं.
डिस्टेंस फॉर्मूला से। मैंने कहा, आई टोल्ड यू अंडरस्टूड ना, मैंने क्या कहा आपको समझ में आ रहा है ना? दो मेथड है, एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और डायगोनल भी प्रूव करेंगे, मतलब ये 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है हमें स्लोप, ये चारों का स्लोप निकालेंगे, अपोजिट स्लोप इक्वल, सो ये पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो स्लोप पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और हम बताएंगे स्लोप ऑफ दिस पीएस एंड स्लोप ऑफ दिस जो हमने पहले ही निकाला है, प्रोडक्ट इज -1, तो ये हो गया अपना रेक्टेंगल। लेकिन क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, आई एम रिलक्टेंट टू यूज इट, बिकॉज क्या है कभी कभी टीचर्स को मालूम होना चाहिए तो बोलेंगे कहां से कॉन्सेप्ट लेके आए, और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए विल गो बाय अवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो टेक्स्ट बुक में है, डिस्टेंस का इस्तेमाल करो, डिस्टेंस लेंदी हो जाता है। कोई बात, लेकिन आपको चाहो, इफ यू वांट ना आई विल गिव यू द मेथड, ताकि अगर तुम्हारे टीचर को पूछो अगर जमता है तो कर लो। ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं, स्लोप बाद में करेंगे। सॉल्यूशन, सपोज you know very well, अपना रोज का सपोज xy x1 y1 x2 y2 है बताना। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q R and S are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4 भाई x4, y4 irrespective is just say लिखो वो सब पॉइंट्स फॉर P Q R S x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y, तो ये आपका है x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3 और ये है आपका x4, y, जो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले, पहले हम लोग PQ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस P, PQ मतलब ये, सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अच्छा हमने वैल्यूज लिखे ही नहीं, पहले लिखो व्हाट इज x1 y1 2 1 x2 y2 -1 और 3 x3 y3 -5 and -3 x4 y4 -2 and -4 for these points। so substitute करो, x2 is -1, ये माइनस और ये प्लस, -2 स्क्वायर 3 -1 स्क्वायर क्या आएगा भाई, -3 स्क्वायर +2 स्क्वायर
ये कितना आता है 9 + 4 √13 यूनिट की डिस्टेंस और लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। पी क्यू अभी एस आर SR, so x4 x3 है, so x4 ये x4 minus x3 plus y4 minus y3, तो ये कितना होगा, x4 is -2 minus plus 5 square, x4 is -5 minus plus 3. ये मैं 6 बार करना है इसलिए मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया। Therefore SR equal to square root of 3 square plus 2 minus 2 square, तो ये हो गया आपका 9 plus 4, so SR equal to √13 units. देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore from 1 and 2 PQ equal to S, ये अपना थर्ड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट, ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब आते हैं PS पे। PS equal to distance P comma S. x4 x1, so x4 minus x1 the whole square plus y4 minus y1 the whole square. Therefore PS कितना होगा, सब्स्टिट्यूट करो। x4 कितना है, x4 and x1, ये PS -2 square plus -5 -1 -4 the whole square -6 the whole square, 16 plus 36 52, 13 into 4, therefore PS क्या होगा, 2√13 units. So double of PQ and SR. अभी आते हैं अभी QR लेते हैं। ये है आपका फोर्थ QR, distance Q comma R, x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square. So QR कितना हो गया, square root of x3 is -5 plus 1, -5 minus plus 1 the whole square. ये -3 -3,
तो ये हो गया आपका 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो ये भी आपको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 2√30 तो QR मिला अपने को। Therefore QR is 2√13 units। ये कौन सा है, ये 4 हो गया तो ये 5। Therefore from 4 and 5 PS equal to Q। See opposite sides are congruent, so ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। Since from ये अपना है 3 and 6, from 3 and 6 as opposite sides are congruent, quadrilateral PQRS is parallelogram। ये आपका पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए पहला क्वाड्रिलेटरल। अब हमें डायगोनल कॉन्ग्रुएंट बताना है ना। PR इक्वल टू डिस्टेंस P, R। क्या है ये, x3 x1 x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square। x3 क्या है देखो, -5 -2, y3 क्या है, -3 and -1। यह आपका हो जाता है -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 49 प्लस 16 65 √65 यूनिट्स। ये आपका PR, ये हो जाता है आपका 6 हो गया ना, ये है 7। अब आते हैं QS या SQ, QS पैरेलल। Now QS is equal to distance Q, S square root of x4 minus x2, x4 minus x2 the whole square plus y4 minus y2 the whole square। So QS कितना हुआ, y4 कितना है, -2 minus of minus plus 1, y4 is -5 -3। तो ये होगा आपका -1 स्क्वायर प्लस 8 -8 स्क्वायर। तो ये आता है 1 + 64। Therefore QS equal to √65 units। ये हो गया आपका 8। अभी 7 and 8 से क्या पता चलता है, फ्रॉम 7 and 8 PR इक्वल टू QS। डायगोनल है ये, डायगोनल PR इक्वल टू
diagonal PS. Therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle as diagonals are congruent. देखो ये पैरेललोग्राम है, and when the diagonals of the parallelogram are congruent, it is a rectangle. ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12. यह लेंदी था. एक बार स्लोप से करके दिखाओ आपको, ताकि चलो स्लोप से करते, छोटा सा और आपको जल्दी समझ में आएगा. ये डिस्टेंस बहुत लंबा है. स्लोप से करते हैं. सेम क्वेश्चन देखो ना, और उससे आपको यही पता चलेगा. वो जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट पे दिया है, देखो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वो भी आपको पता चलेगा. सेम क्वेश्चन विल डू इन डिफरेंट वे. छोटा मेथड. ये डिस्टेंस फॉर्म ये सिर्फ निकाल देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ये बहुत लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. ये जो अभी हमने किया वो भी अपने को 4 लेने ही पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है और एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है. ना स्लोप ऑफ लाइन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये 3 माइनस 1 अपॉन -1 -2, तो ये आएगा 2 अपॉन -3, तो -2 अपॉन 3. देखो स्लोप ऑफ लाइन PQ is -2 अपॉन 3. ध्यान दो, इसको हम m1 लेते हैं कि बाद में नहीं, इसको m1 लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन PQ. क्या कर रहा है, इसको रहने दो ऐसे. Now go to next. Slope of line SR. इसको मैं m1 लेता हूं पर्पसली. देखो SR ये y4 माइनस x4, सॉरी y4 माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x3. y4 कितना है, -5 माइनस +3, और x4 इज -2 -5. तो यह आएगा आपका, इसको गड़बड़ कर दिया, प्लस माइनस प्लस -2 अपॉन 3. देखो सेम स्लोप. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन SR इक्वल टू m1 इक्वल टू -2 अपॉन 3. मैं जानबूझ के m1 लिया, यू अंडरस्टैंड, ये हमें बताने के लिए. रेक्टेंगल डायरेक्टली. Since slope of line ये 2 है, slope of line PQ equal to slope of line SR from 1 and 2. Therefore, sec PQ parallel sec SR. ये सेगमेंट नंबर 3 है. अभी जाते हैं हम लोग PS एंड QR पे. स्लोप ऑफ लाइन
QR लेते हैं। तो ये एक y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, क्या होगा ये y3 माइनस 3 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, तो ये -6 अपॉन -4, तो यह आएगा आपका पॉजिटिव 3/2। देखो ये 2/3 है, ये 3/2 हो गया, देखा। तो मल्टीप्लाई टू इनवर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट -1 आएगा 90। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90, इट्स अ रेक्टेंगल। देखो also स्लोप ऑफ PS, इसको हम M2 लेते हैं जानबूझ के, ताकि M1 इंटू M2 का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। ये y4 माइनस y3 अपॉन ये ना y4 x1 है, y4 माइनस x1, तो y4 है -5, y1 है -1 अपॉन x4 है -2 और ये है -2, ये आता है -6 अपॉन -4। therefore slope of line PS equal to M2 is equal to again 3/2। देखो from 4 and 5, slope of line QR equal to slope of line PS। Therefore, sec QR parallel sec PS, ये है 6th statement। Now see, PQ is parallel to SR, QR is parallel to PS. Therefore, from 3 and 6 as opposite sides are parallel, quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव किया। अभी लास्ट ये M1 और M2 देखेंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन SR मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन, देखो मैंने SR लिया, PS लो, PS कितना होता है इक्वल टू M1 इंटू M2, बराबर ना, M1 इंटू M2 कितना आता है ये, therefore M1 इंटू M2 कितना आता है ये, M1 इज -2/3 और ये है 3/2, therefore M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, इसको याद रखो। Therefore, line PS perpendicular line SR, that is angle PSR equal to 90 degrees. If one angle of a quadrilateral is, if one angle of a parallelogram is 90, quadrilateral is, therefore quadrilateral PQRS is a
rectangle. If one angle of parallelogram is 90 degrees, then quadrilateral is rectangle. याद रखो, if one angle of a quadrilateral is 90, quadrilateral is rectangle. ये था वो दूसरा मेथड, ये याद रखो, मैंने वो नोट में दिया था आपको, और ये छोटा सा है, 4 बार हमें जो तुम्हें आपको इजी लगे वो इस्तेमाल करो। मैंने ये जानबूझ के किया, आई डिड इट पर्पसली बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको नहीं दिया है, मतलब है क्वेश्चन लेकिन वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया, और अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो यू शुड एबल टू डू इट। इसलिए मैंने ये उस मेथड से सॉल्व किया जो मैंने आपको नोट में दिया था, इंफॉर्मेशन में दिया था। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13। चलो, क्वेश्चन 13 क्या है देखेंगे। Find the lengths of median of a triangle whose vertices are. ये बहुत इजी है। क्वेश्चन 13, देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी, 1 -1 B value is 5,3, 5, -3, and C value is 3,5. बराबर ना? 1 -1, 5 -3. You have to find length of the median, sir. वही पूछा उन्होंने. Yes, you have to find length of the median. तो पहले आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ मीडियन मालूम होना चाहिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? ध्यान दो. डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज अ सेगमेंट. तो सेगमेंट होता है अ सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स. इसका मतलब ये समझो, मैं यहां लेता हूं ना, तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए. तो इसको एल लेते हैं. सपोज एल इज द ABC, L लेते. L is the midpoint of BC. अब यहां से what is median from vertex B? ये देखो, इसको M लेते हैं. So a segment joining the vertex and midpoint of the opposite side. So ये जो है congruent, और इसको आते L and N are midpoints of BC, AC and AB by definition of median. और उसके पहले हमें वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे. ये मिड पॉइंट निकालेंगे. सॉरी, आई हैव टू फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दिस यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला से हम मीडियन निकालेंगे. तो हम इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, इसको x4, y4, मालूम नहीं ना अपने को, x5, y5, x6,
तो पहले हम लोग इसका ये फाइंड कोऑर्डिनेट ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स एंड देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड BM, BAL एंड CM. ओके, चलो जब लेंदी होने वाला है तो हम इसको प्रॉपरली हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा बोर्ड को. यूटिलाइज बोर्ड अकॉर्डिंगली. तो हम इसके बोर्ड के हो सके तो 4 हिस्से करेंगे. ओके, एंड ट्राई टू कंप्लीट इट. ये फिगर दिया हुआ है. चलो हमेशा की तरह हम सपोज कोऑर्डिनेट लेके चल पड़े. उसके पहले प्लीज डिफाइन दैट L, M, N are midpoints by definition. Solution. Construction होता है पहले. Draw seg AL, seg BM and seg CN medians to side BC, side AC and side AB. ये अपना कंस्ट्रक्शन. तो अपना सॉल्यूशन चालू हो जाएगा. Therefore, point N is point L, लेते हैं point L, point N and N. Points L, M, N are midpoints of side BC, side AC and side AB respectively. उसका रीजन क्या है? By definition of median. Definition of median से L and N are midpoints of BC, AC and AB. अभी सपोज लेते हैं. All suppose coordinates of A, B, C, L, M and N be x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5 and A, B, C, L, M, N. 6 है ना? And x6, y6 respectively. Therefore, सबके लिखो A for A, B, C, L, M, N, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x अपने को मालूम ही नहीं है, यही मालूम है अपने पास ना.
वी नो ABC ओनली, बाकी तो हमें मालूम ही नहीं है. चलो, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, coordinate of point L. पॉइंट क्या x4, तो इन दोनों को ऐड करो. इट विल बी x2 plus x3 upon 2 and y4 will be y2 plus y3 upon 2. So x4 क्या होगा? x2 क्या है? 3 plus 5 या 5 plus 3, 5 plus 3 upon 2. और y4 क्या? y ये क्या हैगा? -3 plus 5, -3 plus 5 upon 2. So ये आएगा x4 will be 8 upon 2, 4. y4 will be 2 upon 2, 1. तो आपको मिल गया ये 4,1. अभी जानते हैं हम लोग m की तरफ, फाइन m, दैट इज x5 y5. सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला सही. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट अभी m, l हो गया अभी m. m कितना है? x5. x5 will be x3 plus x1, x3 plus x1 upon 2, and y5 will be y3 plus y1 upon 2. Therefore x5 कितना हो गया? x3 is 3 minus 1, 3 minus 1 upon 2. y5 कितना है? y5 is 5 plus 1 upon 2. So x5 कितना हो गया? 2 upon 2. और y5 कितना हो गया? 6 upon 2. So therefore x5 is 1. यहां लिख लेता ना सीधा 1. 2 upon 2 is 1. और ये हो गया आपका 3. 1, coordinates of point N. x6. x6 क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से x2 plus x1, x2 plus x1 upon 2. और y6 क्या होगा? y2 plus y1 upon 2. Therefore x6 कितना है? 5 minus 1, 5 minus 1 upon 2. and y6 कितना है? -3 plus 1 upon 2. So x6 हो गया 2 because 4 upon 2, 5 minus 1, 4 upon 2 is 2. and y6 हो गया -3 plus 1 is -2 upon 2 is -1. ये है आपका 2, तो हमें और कोऑर्डिनेट्स मिल गए. Now we go to distance using now distance formula. Using therefore now using distance formula या formulae LAE.
AL इक्वल टू डिस्टेंस A, L, क्या होगा ये? x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर, ये L और A लेना है अपने को, AL याद रखो, प्लस y4 माइनस, तो ये कितना हो गया? x4 कितना है? 4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y4 इज 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो ये आपका आता है 5 द होल स्क्वायर। सो AL इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो मीडियन मिला आपने को, एक मीडियन मिल गया। अभी दूसरा मीडियम है अपना, मीडियन है BM। BM is distance B, N equal to square root of BM. So x5 minus x2 the whole square plus y5 minus y2 the whole square. x5 is 1 minus 5 the whole square plus y5 is 3 minus minus plus 3 the whole. तो ये आता है आपका -4 the whole square plus 6 the whole square. 16 plus 36 52. 13 into 4. Therefore, BM equal to 2 root 13 units. अपने को सेकेंड लेंथ ऑफ द मीडियन मिल गया। नाउ वी गो टू CN। CN is equal to distance C, N. This is equal to square root of CN x6 minus x3. x6 minus x3 the whole square plus y6 minus y3 the whole square. 2 minus 3. -1 minus 5 the whole square. ये आपका आता है -1 the whole square plus -6 the whole square. 1 plus 6 square is 36. Root 37 units. फाइनल आंसर लिख दो। Length of median. Length of median AL is 5 units, comma, length of median BM equal to 2 root 13 units length of median CM root 37. Question number 13 completed. अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल
Okay. You are easy. Question 14. Question 14. This will be all 4 marks question, but not challenging. These are not challenging.